Subscribe to our YouTube channel, Edelweiss Mutual Fund, and click on the bell icon for notifications. Hi, and welcome to Market Talks, a series by Edelweiss Mutual Fund wherein we share details about key themes prevalent in India and also share basic concepts related to Indian capital markets. So say that you are a wholesaler and you purchase a certain product from the manufacturer at X price and you sell the same product to the retailer at X plus 1. So here you have two markets, one where you purchased the product and the other where you sold, and the plus 1 is essentially your profit, or also called as spread in the arbitrage parlance. So yes, the topic for today's session is understanding arbitrage on how it works in the Indian capital markets. Hi, I am Shikha Sood and I am joined by Bhavesh Jain, Fund Manager and Co-Head Factorial Investment Team at Edelweiss Mutual Fund. Hi Shikha, thank you for having me here. So Bhavesh, you've had a distinguished career in capturing arbitrage opportunities in the Indian market. So can you share with us how arbitrage actually works in India? See, in arbitrage, as you gave the example of wholesaler and retailer, similarly here we also have two different market. One is NSE equity and second is NSE future. Now, the only thing how you capture this spread is there is an expiry date wherein last Thursday of every month is normally the expiry date for future, where compulsorily cash and future price converge. So normally you buy equity shares, you sell future. So it is like in your example, it was X and X plus 1. Similarly here you buy, say for example, a stock at 2000 rupees and you sell the future at 2020. So this 20 rupees is the spread which you try to capture, and this will be realized on last Thursday of the month when both cash and future price will converge, and either the stock price will go to say higher price or lower price, or it will remain where it is. In all the three scenarios, you will make this 20 rupees as your profit. And that's why normally arbitrage is also considered as a fixed income product, because you are like in FD, when you say FD, because your interest rates are fixed. Similarly, when it comes to fixed income, you can say funds, there your coupon rates are fixed. Similarly, in arbitrage, your spreads, that is the gap between your purchase price and sell price is fixed. So that's why it is also like a fixed income product where you get fixed spread month after month. And normally we keep on, you can say, do this kind of trade so that without taking any directional risk in market, because our entire position is totally hedged, we intend to give, you can say, in a way risk-free rate which is equal to short-term interest rate in economy, and that is how this product works. Okay, fantastic. And you spoke of hedge, you used the word hedge, and that is the core crux of an arbitrage strategy, because it gives you stable and steady returns. Considering you don't have open exposures, that is, you have, if you're long in one security, you will be short, or you would have sold the same security in another market. So therefore, you are completely hedged, and therefore you get relatively, or we can say, fixed returns. Yeah, and then it is as good as you can say you are not taking any market view over here. Yes, absolutely. So Bhavesh, how has the journey been for arbitrage funds? They were started probably more than 2 decades ago, but what we've seen is that they have picked up in terms of awareness and significance and acceptance in probably the last decade, and more so what we've seen is, in fact, in FY24, the AUM straight on doubled in one single year. So what are the key catalysts that lead to this AUM growth? If you'll see, the first arbitrage fund started somewhere in 2005 or 2006. I will break this journey into maybe two, or you can say three parts. So from 2005 till 2014, there were multiple arbitrage fund, but overall the category AUM was less than 5,000 crore, because at that point of time, people were not finding it that attractive. Then if you will see, the first change in, you can say, this product happened in 2014 July, when NDA government won the election. Prime Minister Narendra Modi and his, you can say, Finance Minister announced the first budget somewhere on, you can say, July 2014. There one important step was announced, and that was change in taxation for fixed income, wherein long-term capital gain tax definition for fixed income was changed from 1 year to 3 years. So as I told you, the first journey, that was the phase from 2005 till 2014, total AUM of the industry was around 5,000 crore. Then from 2014, when this taxation change was announced,
if you take next 9 years, that is from 2014 to 2023 March, the category grew from almost, you can say, from 5,000 crore to almost 80,000 crore. And then the third leg of journey, you can say, started when again in the latest budget which was announced in 2023, again the finance ministry changed definition of debt taxation and the whole benefit of indexation was taken away. Now your incremental long-term capital gain tax in debt will be charged as per your marginal rate of tax. So that whole benefit of indexation went out, and that is where the next leg of growth for arbitrage as a product started flourishing. You will see from 2014 to 2023, the category jumped to almost 80,000 crore, and in last 1 year, that is from, you can say, 31st March 2023 to 31st March 2024, the category from close to 80,000 crore today is almost more than 1,80,000 crore. So a journey of almost 1 lakh crore just in last 1 year, where you can say some reasons, there are multiple reasons. Primarily, as I told you, the change in debt taxation. In addition to that, arbitrage fund delivered exceptional return in last 1 year, and that can also be, you can say, one of the reason why we kept on getting higher flows. But overall, this journey, if you will see from say close to 5,000 crore in 2014, today we are talking about a product at 1,85,000 crore. So that has been the growth journey for arbitrage, or you can say over last 20 years. Primarily, the focus has come in last 10 years. You can say both the tax change which happened, where first debt taxation changed from 1 year to 3 year, and then indexation benefit was totally taken away. These are the two primary drivers why we have seen such a phenomenal growth in this category. You spoke of returns. And FY24 had relatively higher returns, probably among the highest that it would have seen in the recent past. But at the same time, what we've noticed is, say, in a COVID year, where the returns had corrected to a great extent. So what causes this changes in returns? So again, see, in arbitrage, as we have taken a very simple example that we buy at a price and we sell at a price which is at a premium. But first we have to understand the maths, why future always stayed at a premium, or in most of the cases future trades at a premium. So there the basic concept is normally your cost of carry, which is nothing but your interest rate in economy. So there is a, you can say, in a way, a direct correlation between interest rate as well as spread of arbitrage fund. So again, if you go back in 2014, so 2014-15, where interest rates, or you can say proxy for that can be returns of liquid fund. When liquid fund was giving you returns in the range of 8 to 9%, most of the arbitrage funds were delivering returns in the range of 8 to 9%. Then during COVID, where you can say all economies or all, you can say, large central bank decided that they will do whatever it takes to protect their economy from, you can say, the impact of COVID. That time interest rate in India went down to 4 to 5%, and in line with that, returns of liquid fund as well as return of arbitrage fund plunged to almost, you can say, 4 to 5%. Then after, you can say, March 2022, when US started increasing rate, followed by RBI following the same suit and hiking interest rate in India, returns of liquid funds started going up. That is again, you will see from 4 to 5%, return of liquid funds started moving to 7.5%, and in line with that, returns of arbitrage fund also have started giving you in the range of 7.5 to 8%. So beside, you can say, interest rate, there are other factors also which impact spreads of arbitrage fund, but you can say 90% of return of arbitrage funds can be explained using short-term interest rate in economy. Sure, that was very helpful. The other point what we've noticed is that to start off with, you said that in an arbitrage trade, there is one market in which there's a spot or a cash market in which you buy a security, and then in the other market, you enter into a contract to sell that particular security at a predetermined price at a certain date. So therefore, your spread or the return is locked. Your buy price and your sell price is locked. So therefore, we have stable returns. But what's interesting is that it said that volatility is arbitrage funds' best friend, market volatility. So how does that work? So again, to understand this, you have to take example of, you can say, one particular stock. Say for example, if I initiate arbitrage in Reliance, say Reliance spot is say around 2500, I sell Reliance future at 25, and I am making that 1% as my spread. Now, in an ideal scenario, if there is no volatility in market, that means Reliance prices are moving in the normal way, there is no event, there is no volatility, I will realize this 25 rupees profit on last Thursday of the month. So say for example, I initiate the trade on 1st and 30th is the last Thursday of the month. So in 30 days,
I will make this 25 rupees or 1% as my profit. But what happens if there is a lot of volatility? There is some announcement, some news flows which come into Reliance, either there is results or some corporate action. So what will happen? Reliance price will become extremely volatile. And in this volatile scenario, what happens? This gap of 25 rupees, ideally if I am getting this 25 rupees in 30 days, that means every day I should make around 80 paisa. So if it would have been a liquid fund, returns would have been linear. But because it is not a liquid fund, it is having a concept of mark to market. That's why returns are more, you can say, not so linear as compared to liquid fund. So in a volatile market, there can be a situation where out of this 25 rupees, I am making say 20 rupees in first 2 days or first 3 days. Then if I wait for remaining 27 days, my profit will only be 5 rupees. So at that point of time, as a fund manager, I can take a call that I will exit this and book a profit of 20 rupees and redeploy this money into some other opportunity where the spreads are still say 15 rupees or 17 rupees or maybe 20 rupees. So same amount of money will get deployed twice or maybe thrice in a volatile market and thereby generating higher return. So that's why we always say volatility is good for arbitrage fund. What we want is either a big bull market, because in a bull market, more and more people want to take leverage position. If more and more people want to take leverage position, that means demand for future is high. Finally, the whole concept of arbitrage is nothing but demand and supply game. If demand for future is high, automatically you will get better spread, and that's why in bull market, normally returns are on the higher side. If markets are not bullish, then at least you want a volatile market. So that same amount of money can be deployed and redeployed multiple amount of times. So though our initial spread will be slightly lower, but that churning activity wherein the money will getting, you can say, deployed 2 or 3 times will be able to, you can say, more or less compensate the lower spread which we get because of the start of the expiry. What we don't want, or the market where ideally arbitrage will not perform, will be a big bear market like 2011 or the COVID fall of 2020 or maybe 2008. Normally in a big bear market, the entire demand for future goes away. Because in bear market, no one wants to take leverage, no one wants to go bullish on market, and that's why they are not ready to go long. And if no one is ready to go long as a supplier, demand is not there, then automatically price will crash. Here the price is your spread. So ideally a bull market or a volatile market is good for us, and a bear market is not so good for us. So, yeah, which is why we also say that the sentiment in the Indian equity markets is a key driver of arbitrage returns. By sentiment is what you just mentioned, that in case it's a bull market or it's a bear market. So, which is why volatility always works for us. The other thing is there are various participants in the arbitrage market. There will be HNIs, there will be domestic mutual funds, there will be retail, there will be FIIs. How does their work or activity affect the arbitrage returns? So again, as I told you, this is the whole concept of demand and supply. So if more and more people are active in market, either on the long side or on the short side, accordingly your spreads will increase or decrease. So if you will see today, who is the, you can say who is the counterparty who is buying the future? Because for arbitrage, the basic trade is I am selling future, so I want someone who is buying the future. Now today, who is on the long side of the market? Those who are bullish. Who are bullish today, if you will see, majority of the long position is dominated by HNI and retail. So if HNI and retail are positive on the market, they are ready to buy futures, and HNI and retail are purely, you can say, short-term traders in nature, or you can say have taken some speculative bets. And in that scenario, if they think that this particular stock in next 1 month or next 2 months is going to give me say 10% return or a 15% return, then I don't hesitate to roll over my position from 1 month to another month, even at 10-15 basis point premium compared to the normal interest rate economy. That's why in a bull market dominated by HNI and retail, like what we are going through right now, your spreads in arbitrage will be liquid fund plus, you can say, 100 basis point. Similarly, if this rally would have been dominated by FII, who are again your another counterparty. Now FIs are known to be, you can say, smart investor, or you can say they will not give you that free lunch. So if counterparty or this bull market is rally, you can say, dominated by FII, your spreads will be more or less equal to your returns of liquid fund. Now if you can say you break this, you can say, categories. So there are 4 major counterparties, or you can say participants on derivative segment. One is your prop desk, one is your HNI and retail, then there are FII, and then participant like us, or you can say DIIs. So these are the 4, you can say, participant of this entire derivative market or equity market, you can say. So Bhavesh, you spoke of how interest rates are so important
for running an arbitrage strategy and also how volatility plays a very key role. But what about the different participants that are involved in a derivatives on arbitrage strategy? So normally you will see there are different kind of participant and then because of those participant, demand and supply game can change dramatically. So broadly this entire market is being divided into 4 parts, where HNI and retail is one of the largest participant. Then you have FIIs, you have DIs like us, and then you have prop desk who are doing arbitrage for their own, you can say, company. Now if you will see today, this is a bull market dominated by HNI and retail. Now HNI and retail are typically, you can say, short term trader or are taking some, you can say, calculated short term trading ideas. So if they feel that this stock is going to give me say 5% return or 10% return or maybe 20% return in next 1, 2 or 3 months, then they will not hesitate to roll over that stock even at a 10 to 15 basis point higher premium compared to your normal interest rate in market. And that's why today you will see returns of arbitrage fund are almost, you can say, 1.5% higher than liquid even on a pre-tax basis, because the rally is dominated by HNI and retail. If the same rally would have been dominated by FIIs or you can say large traders, in that scenario they would have not given you this free lunch. That time your rollovers level would have been more or less in line with your interest rate in economy. Now another participant is, as I told you, the prop desk. So if you see overall, the total open interest today in market is close to say 3,30,000 crore. Out of this 3,30,000 crore, there are, you can say, like as a mutual fund, I am short in my arbitrage fund, but I am long in my large cap fund. Similarly, HNI and retail will be long in some stocks, short in some stocks, and same thing goes for FIs and prop desk. If we net out all the positions, like as a mutual fund, I am long and short. If I net out my position, mutual fund as a whole are short, you can say somewhere around 1,80,000 crore short in market, dominated by obviously arbitrage fund or balance advantage fund, like we have some hedging position in balance advantage fund, and then equity saving fund also. So entire mutual fund put together are short 1,80,000 crore. Now who is our counterparty? So on the long side, out of this 1,80,000 crore, almost 1,40,000 to 1,50,000 crore is with HNI and retail. And that's why I say that this rally is dominated by HNI and retail on the long side. And that is one more reason that why spreads are on the higher side. Now HNI and retail holds almost 1,40,000 to 1,50,000 crore position. Prop desk and you can say FIs will be around 25 and maybe 10-15,000 crore on FIs. Prop desk will be around 25,000 crore. So these are your participant on the long side, totally dominated by mutual fund on the short side. Now if you have to look at the impact of, you can say, different positioning, so as I told you, today if AUM of arbitrage fund goes up further, then our supply side pressure will increase. Or if AUM remain constant and market goes higher, so finally open interest is nothing but function of quantity into price. So if price goes higher, automatically open interest will increase. If open interest will increase, automatically more opportunity for arbitrages like arbitrage fund will go higher. On the other side, if you can say FIs become very active on the arbitrage side. So if you will see, as I told you, there are various factors which impact arbitrage spread. One more factor is interest cost or FII and hedging cost for FII. Okay. See, earlier when interest rate in, you can say, developed markets were 0 or you can say 0.5 or 1%. So an FI can easily borrow money in their local market at say 1%. They bring that dollars into India and their hedging cost will be say around 4 to 4.5% or maybe 5%. So their effective landing cost in India would have been 6%. 1% interest rate plus 5% hedging cost, it would have been 6%. So even if Indian markets are giving them arbitrage opportunity at 7%, they would happily deploy because they are getting risk-free, you can say 1% spread. So on a 6% deployment, they are getting arbitrage at 7 to 8%. So they will more happily do it arbitrage in India. But now if you will see in last 1.5 year, interest rate itself in developed market like US have gone up from say 0.5% to 1% to as high as 4 to 5%. So now their hedging cost plus their interest rates is so high that they are no longer doing arbitrage in India. So in a way, your competition is moving out. So again, as I told you, the whole game is again of demand and supply. Now demand is higher because HNI are on the long side, your prop desk are also long side, your FIs are also long side, and on short side, your FIs are not doing arbitrage, your prop desk are not doing arbitrage. So it is only dominated by mutual fund. Okay. And that's why we are getting this higher spread because as I told you, till the time
market sentiments remain positive, HNI and retail will continue to hold their long position. Till the time HNI and retail dominates this long position and the market upside, you as an arbitrager will keep on enjoying this higher spreads. Okay. So can we say a year like 2024 is possibly a year when all factors worked in favor of the arbitrage fund and they all worked in tandem and therefore that led to the higher returns? Yes. So normally see it was usually like if interest rates are going higher, normally equity market used to correct or at least go sideways. This time we are going through a different phenomena, and it is not only in India. Globally, if you will see, interest rates are going higher for last 1.5 years. At the same time, most of the equity markets are also at a lifetime high. So it is like best case scenario for arbitrage. You are getting higher interest rate, plus you are getting better spread because more and more people are bullish on market. So this is like, you can say, the best thing which can happen, and that is all going on for almost now last 1.5 years. Sure. So you mentioned that there are so many participants who are interested in entering into derivative contracts here in India. So what are the stocks, what are these type of stocks that they typically enter into the F&O positions? So are they, because of the liquidity, that is a critical criteria also for a derivatives contract, is this largely large caps, or are there some probably a mid cap and small cap stocks also available? So you will see F&O eligible stock, there is a list which keeps on getting updated from exchanges. Right now there are around, you can say, 185 to 190 stocks which are part of F&O universe. At peak, the number of stocks in F&O was almost 235 stocks. At bottom, we have seen around 140, 150 stocks, and today we are somewhere in between at 185 to 190 stocks. Now, it has been a long time where new stocks have not been added to F&O universe. There are many stocks which are meeting all the criteria. So the criteria are on free float market cap, impact cost, and then few others. There are many stocks which are meeting this criteria, but as of now, they are not getting added to the universe. Again, if more and more stocks get added to F&O universe, the whole game of demand and supply will come into picture. If demand will go up, because as number of stocks will go up, automatically demand will go up. Again, as an arbitrager, you will get better spread. Today, that 190 stocks, around 190 stocks which are there in F&O universe, most of them are large cap and you can say some mid cap. There are, you can say, few small cap stock also which are part of F&O universe. Again, there are some large cap stocks which are not part of F&O universe. So you will see stocks like DMart, stocks like Zomato, LIC, all of them are you can say practically are large cap, but are not there in F&O universe. So the list is purely, you can say, depending on NSE whenever they publish their list, because we are more active on NSE derivatives. So we look at that list for our you can say trading positions. So Bhavesh, so far you've explained how the entire arbitrage strategy works. You also took us through the journey and the key factors that affect arbitrage returns. But now I think it's a good time to segue into how the arbitrage portfolio is structured and how does that look. Now, of course, we are aware that because of the spot or cash positions that you take, you would have exposure to direct equity. But we've also noticed there is a significant portion which is exposed to debt securities. Now, for the derivative segments, we are aware that you have to place certain margin as collateral for entering into the trade. So, can you take us through a little more on what exactly are the components of the arbitrage portfolio? अगर आप कोई नॉर्मल आर्बिट्राज फंड देखोगे, समझो उनका AUM 100 रुपया है, तो ऑलमोस्ट 70 से 75% उसमें कैश फ्यूचर आर्बिट्राज पोजीशन होगी, जो कि पूरी तरीके से हेज होगी. मैंने अगर 1 लाख शेयर रिलायंस के लिए है तो उसके सामने मैंने 1 लाख रिलायंस के फ्यूचर बेचे हुए रहेंगे, तो ये 70-75% पोजीशन पूरी हेज है. अब जब मुझे रिलायंस के इक्विटी शेयर्स लेने हैं तो मुझे उसके लिए पूरे पैसे अपफ्रंट भरने हैं, लेकिन जब मुझे रिलायंस का फ्यूचर बेचना है तो मुझे एक्सचेंज को मार्जिन देना है. और मार्जिन देने के लिए अलग अलग तरीके हैं. तो जो भी ट्रेडिंग करते होंगे उनको पता होगा, नॉर्मली मार्जिन के लिए लोग कोई फिक्स डिपॉजिट देता है, कोई अपने कैश पोजीशन से कैश उनके हाथ में दे देता है, कोई अपने इक्विटी शेयर्स एक्सचेंज के पास प्लेज कर लेते हैं, या जो एक्सचेंज की लिस्ट ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज़ है उसमें से आप कोई भी सिक्योरिटीज़ वहाँ पे दे सकते हो. आइडियली अगर आप देखोगे जितने भी आर्बिट्राज फंड इंडियन मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, मेजॉरिटी 70-75% अपना AUM कैश फ्यूचर आर्बिट्राज में रखते हैं. ऑलमोस्ट बचा हुआ 25% जो है उसमें से कुछ लोग अपने ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं और वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एक्सचेंज को देते हैं एज ए कोलैटरल. कुछ फंड है जो T-बिल्स ले लेते हैं, GSEC ले लेते हैं और वो एक्सचेंज को दे देते हैं एज ए कोलैटरल. एंड बाकी जो उनके इक्विटी पोजीशन रहती है, जैसे आर्बिट्राज में मैंने इक्विटी खरीदा और फ्यूचर बेचा है, तो जो मेरी इक्विटी की पोजीशन है मैं वो भी एक्सचेंज के पास रख के उसके अगेंस्ट भी कोलैटरल मार्जिन लेके डेरिवेटिव ट्रेड कर सकता हूँ. इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियोज में आप देखोगे
the ratio will be 75%, 70 to 75% equity and 25 to 30% fixed income, or you can say debt. ओके ओके सो भावेश, अभी तक हमने काफ़ी अच्छी बातें कर ली आर्बिट्राज के रिटर्न्स अभी, स्पेशली बिकॉज FY24 के रिटर्न्स इतने अच्छे रहे हैं, बट आई एम श्योर इतनी लंबी हिस्ट्री है ऑफ ऑलमोस्ट 2 decades और मोर देन 2 decades ऑफ आर्बिट्राज फंड्स, सो कोई तो सिनेरियो होगा जिसमें आर्बिट्राज के रिटर्न्स इम्पैक्ट होते होंगे या नेगेटिव रिटर्न्स आए होंगे कभी? देखिए, आर्बिट्राज फंड का अगर मुझे रिस्क के बारे में मुझे बात करनी है तो यस, पिछले अगर मैं 15-20 साल की हिस्ट्री देखूँ तो ऐसे भी पीरियड आए हैं जहाँ पे किसी आर्बिट्राज फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, ऐसे भी पीरियड आए हैं जहाँ पे आर्बिट्राज फंड के रिटर्न लिक्विड फंड से भी कम रहे हैं। बट अगर मैं 120 महीने का डेटा देखता हूँ, पिछले जैसे कि 10 साल में 120 महीने का अगर मैं डेटा देखता हूँ तो हार्डली ऐसे 2 या 3 महीने आए हैं। अब इसमें आप जब आर्बिट्राज फंड इवेल्युएट करते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले लोग अपने रिटर्न्स बढ़ाने के लिए अनवांटेड रिस्क लेते हैं। सो अगेन, अनवांटेड रिस्क आप इस तरीके से देख सकते हो कि नॉर्मली मेरा जो इन्वेस्टर आर्बिट्राज फंड में आएगा उसका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या रहेगा, एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल, someone will be coming for maybe 3 months, 6 months और मैक्सिमम 1 year। अगर मेरे क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 3 महीना है और इस फंड में मैं 10 साल का जीसेक लेके रख दूं, तो जब भी इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट उसके अगेंस्ट जाएगा वो क्लाइंट नुकसान में जाएगा। सिमिलरली क्लाइंट मेरे पास आया है सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, पार्किंग के लिए, लिक्विडिटी के लिए। अब उसी आर्बिट्राज फंड में मैं रिटर्न्स बढ़ाने के लिए क्रेडिट ले दूं और जब वो क्रेडिट मेरे अगेंस्ट चला जाए तो वहाँ पे भी मेरे फंड में अगर कोई डिफॉल्ट आ जाए, किसी का रेटिंग डाउनग्रेड हो जाए, तो उस सिनारियो में भी उस क्लाइंट को नुकसान होगा। तो आर्बिट्राज में क्योंकि इक्विटी में आपके लिए कोई रिस्क नहीं है, इक्विटी की आपकी पोजीशन टोटली हेज है। अब आपका स्टॉक जिसमें आपने आर्बिट्राज की पोजीशन ली है वो चाहे 50% नीचे गिर जाए या 50% ऊपर चला जाए, आपको उसमें कोई एडिशनल फायदा या एडिशनल नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका स्प्रेड, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, इट इज लाइक अ फिक्स्ड इनकम फंड। योर स्प्रेड इज फिक्स। अब वो स्टॉक 50% नीचे चला जाए, 50% ऊपर जाए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिक्स्ड इनकम में अगर कोई पेपर आपका डिफॉल्ट हो जाए, सो दैट कैन बी एक्चुअल लॉस। So in equity position there can be M2M mark to market volatility, but in fixed income position there can be actual loss. And if you look at history for last 10 years, the only couple of instances where you can say arbitrage fund would have given negative return for a long period of time will be जहाँ पे 2018 में जहाँ पे आपने देखा रहेगा NBFC क्राइसिस आए थे, ILFS, THFL और कुछ अदर नेम्स, तो उस टाइम में हमने देखा था किसी आर्बिट्राज फंड के रिटर्न नेगेटिव थे जिनका एक्सपोजर सम ऑफ द फील्ड NBFC में था। उसके बाद में अगर आप देखोगे 2020 में जब कोविड का बड़ा फॉल आया था, सो देयर वर कपल ऑफ मंथ वेयर रिटर्न्स वेर लोअर देन लिक्विड। सो वो आप देख सकते हो कि एक 3 महीने का पीरियड था जहाँ पे आर्बिट्राज फंड के रिटर्न 2% से भी कम थे। सो उसके अलावा आज तक आर्बिट्राज फंड में ऐसा नहीं हुआ कि आपके फंड के रिटर्न्स नेगेटिव है या आपने लिक्विड फंड को अंडर परफॉर्म किया है। सो अगर रिटर्न्स के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन रिस्क अगर आपको देखना है तो मैं एक ही चीज कहूंगा, you should evaluate fixed income portfolio very closely because that is the only source of risk in any arbitrage fund। इक्विटी के लिए आपको पोर्टफोलियो देखने की जरूरत नहीं है कि पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है, मिड कैप है, सेक्टर्स में मेटल लिया है, फार्मा लिया है, कोई चीज मायने नहीं रखती। द ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ इज द फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो। ओके, थैंक यू फॉर दैट भावेश। एक और अगर एलिमेंट हम थोड़ा सा और अगर डेप्थ में जाएं ऑन हाउ आर्बिट्राज वर्क्स, सो अभी हमने काफ़ी डिटेल में ऑल फैक्टर्स वी अंडरस्टूड, बट अगर आप फॉर आवर व्यूअर्स अगर आप समझाएं कि आप एक महीना सपोज आप लोग के अपने आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी कैसे रन की, हाउ डिड यू एंटर, हाउ डिड यू एग्जिट और डिड यू रोल ओवर, सो क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं एक आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी रन करने के लिए? सो सम ऑफ द की टर्म्स व्हेन इट कम्स टू आर्बिट्राज, फर्स्ट इज फ्रेश आर्बिट्राज। आज मुझे कोई नया पैसा आया, मैंने उससे ट्रेड इनिशिएट किया। अगेन वी गो बैक टू अवर ओनर एग्जांपल, वी बाय रिलायंस इक्विटी, वी सेल रिलायंस फ्यूचर, so this is my fresh arbitrage trade. Okay. Now what is the thing, one thing which is guaranteed, on last Thursday of the month both this price will converge. When it comes to expiry day, that is last Thursday of the month, मेरे पास 3 ऑप्शन रहेंगे। या तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, अगर मुझे कैश की जरूरत है या मुझे कोई रिडेम्पशन आ गया, मुझे पैसे लौटाने हैं, तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। स्क्वायर ऑफ यानी मैं मेरी पोजीशन एक्सपायर कर दूंगा, मतलब मैंने जो रिलायंस इक्विटी में खरीदा था वो मैं बेच दूंगा और जो फ्यूचर शॉर्ट किया था वो मैं कवर कर लूंगा। तो दैट मींस माय पोजीशन गेट्स ओवर। दूसरा ऑप्शन है मैं मेरी पोजीशन को रोल ओवर कर सकता हूँ। रोल ओवर का मतलब ये होगा कि आज की तारीख में मेरे पास इक्विटी खरीदा हुआ है, अप्रैल का फ्यूचर बेचा हुआ है,
अब मैं अप्रैल की एक्सपायरी में आऊंगा, मैं अप्रैल का फ्यूचर खरीद लूंगा, मई का फ्यूचर बेच दूंगा। Okay. फिर मई महीने की एक्सपायरी में मई का फ्यूचर खरीद लूंगा, Okay. जून महीने का फ्यूचर बेच दूंगा। सो इन अ वे मेरी इक्विटी की पोजीशन एज इट इज है, मैंने जो सामने फ्यूचर बेचा है उसकी एक्सपायरी खाली चेंज होती रहेगी। ओके, सो ऐसा करने से क्या होगा, मेरी इक्विटी का जो कॉस्ट है वो बच जाता है, इक्विटी बेचने खरीदने का कॉस्ट है वो बच जाता है, और मैं सिर्फ फ्यूचर रोल ओवर करके हर महीने वो इंक्रीमेंटल स्प्रेड्स कमाते जाऊंगा। तो या तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, या तो मैं मेरी पोजीशन रोल ओवर कर सकता हूँ, या मैं कुछ भी नहीं करूँ और मेरी पोजीशन एक्सपायर करने दे दूं। ओके, पोजीशन एक्सपायर करना अगेन इज इन अ वे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना। ओके, स्क्वायर ऑफ में क्या करते हो, आप एक्चुअली जाके ट्रेड करते हो, आपने जो इक्विटी खरीदा इक्विटी जाके बेच देते हो, जो फ्यूचर बेचा हो जाके खरीद लेते हो। एक्सपायरी करने में आप क्या करते हो, आप कुछ नहीं करते हो, एंड ऑफ डे ऑटोमेटिकली आपके क्योंकि फ्यूचर शॉर्ट थे वो एक्सपायर हो जाएंगे, उसके अगेंस्ट आपकी जो इक्विटी लॉन्ग थी उसकी आप डिलीवरी एक्सचेंज को दे दोगे। सो दैट इज अ फिजिकल सेटलमेंट कंसेप्ट। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली जीरो हो गई, आपको कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये 3 ऑप्शंस है। नॉर्मली मैं रोल ओवर कब करूंगा, जब मेरे ये महीने से अगले महीने में, जब मैं ये महीने का फ्यूचर बाय करके अगले महीने के फ्यूचर में जा रहा हूँ, स्प्रेड इज इन लाइन और बेटर विथ माय शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी, देन आई विल रोल ओवर माय पोजीशन। ओके, मैं एक्सपायर कब करूंगा, जब मैं लास्ट तक वेट कर रहा हूँ कि लेवल्स इंप्रूव हो गए, मुझे रोल ओवर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, पर नहीं मिला, या मुझे कैश क्रिएट करना है आइदर बिकॉज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स, या फिर कोई रिडेम्पशन रिक्वायरमेंट है, या मेरे पास मार्जिन की कमी है, उस सिनेरियो में मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ या एक्सपायर करता हूँ। सो दिस इज हाउ नॉर्मली मंथ आफ्टर मंथ आवर ट्रेड हैपेंस। अब इस बीच में और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, तो रोल ओवर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है चर्न। ओके, चर्न में क्या होता है, आई कीप ऑन मूविंग फ्रॉम स्टॉक ए टू स्टॉक बी, स्टॉक बी टू स्टॉक सी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक वोलेटाइल मार्केट में, वोलेटाइल मार्केट में अगर आपको 30 दिन में 30 रुपए मिलने थे, बट पहले 5 दिन में मुझे 25 रुपए मिल गए, सो आई विल नॉट वेट फॉर रिमेनिंग 25 डेज टू अर्न दैट इंक्रीमेंटल 5 रुपी। व्हाट आई विल डू, आई विल exit my position in stock A and redeploy this money in stock B. Yes. Then stock B to stock C. This is churning, where I keep on moving from one stock to another to generate slightly better spreads. So churn एक important concept है. Normally अगर आप कोई long only fund देखोगे, high churn is taken as a negative aspect. That fund manager is taking short-term bets, he is not having a long-term view. His churning is portfolio quite frequently. But arbitrage exactly उल्टा है. Arbitrage में higher the churn ratio, better it is, because fund manager will churn or move from stock A to stock B only and only at profit. If someone is getting higher churn, that means he is getting higher profitability. So that's why यहाँ पे आपको उल्टे तरीके से देखना है. यहाँ पे churn जितना ज्यादा है, उतना वो फंड मैनेजर है, उतना उसका फंड अच्छा काम कर रहा है, उतना अच्छा रिटर्न बेटर रिटर्न मिलेगा। ओके, ओके। एंड भावेश, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई 3 to 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है, तो आइडली ये फंड उनके लिए है, राइट? किसी को पार्क करना है, किसी को टेम्प्रेरी डिप्लॉय करना है, सो इसलिए ये फंड 3 to 6 मंथ्स के लिए आइडियल है। बट हाउ डज वन इवैल्यूएट, देयर आर सो मेनी आर्बिट्राज फंड्स इन द मार्केट, कोई इवैल्यूएट कैसे करे कि किस में डालना चाहिए पैसा? See, ideally this fund is for someone who have visibility or liquidity of more than 1 month, क्योंकि 1 महीने का हमने एग्जिट लोड रखा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं इन्वेस्टर 1 महीना पूरा करे, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक ही चीज गारंटीड है, आखिरी थर्सडे को कैश और फ्यूचर का प्राइस कन्वर्ज होगा। यानी कि अगर आपका क्लाइंट बीच में आ गया और बीच में ही निकल गया और वो लास्ट थर्सडे तक वेट नहीं किया, तो उसके रिटर्न रैंडम हो सकते हैं। इसलिए हमने 1 महीने का एग्जिट लोड रखा है कि एटलीस्ट वो एक बार तो वो लास्ट थर्सडे वाली एक्सपायरी क्रॉस करे, सो दैट मेरे जो भी रिटर्न है वो रियलाइज हो जाए। तो 1 महीने से ऊपर और 3 साल से नीचे अगर आपका व्यू है, तो आपको आर्बिट्राज में आना चाहिए। 3 साल के ऊपर जाओगे तो आपके पास बेटर ऑल्टरनेटिव्स है, जहां पे आपको आर्बिट्राज फंड से भी बेटर रिटर्न मिलेंगे। नॉर्मली अगर आप देखोगे, हमारे जितने भी मार्केट में जितने भी लोग आर्बिट्राज में पैसा लगा रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट जो भी है, आइडियली वो 6 महीने से 1 साल के लिए आते हैं। तो इसमें आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है वो किस तरीके का क्लाइंट है। आइडियली एक ऐसा क्लाइंट जिसके पास इमरजेंसी कुछ फंड रखा हुआ है, उसने इमरजेंसी फंड नॉर्मली वो अपने लिक्विड फंड में रखता था, या कोई यू कैन से एफडी वगैरह में रखता था। आज आपको वहाँ पे उन प्रोडक्ट से बेटर टैक्स एडजस्टेड रिटर्न आपको आर्बिट्राज में मिल रहा है, तो वो आर्बिट्राज में आएगा। दूसरा सेट ऑफ इन्वेस्टर है जिसको इक्विटी में रिस्क लेना ही नहीं है, और उसको ये पैसा रिस्क फ्री रिटर्न, या आप बोल सकते हो लो वोलेटिलिटी में रिटर्न कमाना है, तो वो पैसा आर्बिट्राज में लेके आएगा। एक ऐसे भी सेट ऑफ इन्वेस्टर रहते हैं जिनको पैसा इक्विटी में डालना है, बट एक स्टैगर्ड तरीके से डालना है, तो नॉर्मली वो एसटीपी के रूप में आते हैं। तो एसटीपी वाला पैसा आपके पास आर्बिट्राज फंड में आता है। बाद में बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट्स क्लाइंट, एचएनआई क्लाइंट, ऐसे लोग जिन्होंने जिनके पास काफी लमसम में पैसा एक साथ आता है, और उनको ये पैसा
अभी अगले 3 महीने 6 महीने कुछ उनको पता नहीं है कि इसकी जरूरत कहाँ पे होगी या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो वो लोग अपना पैसा टेम्पररी आर्बिट्राज में पार्क करते हैं। तो अलग अलग इन्वेस्टर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और इसलिए लोग आर्बिट्राज फंड में आते हैं। आइडियली हम लोग ये कहते हैं लोगों को कि आप मिनिमम 3 महीने के लिए आइए, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया लिक्विड फंड की तरह रिटर्न लीनियर नहीं है, रिटर्न थोड़े वोलेटाइल होते हैं। तो ये मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट जितना आपका ड्यूरेशन ज्यादा होगा उतना इसका इम्पैक्ट कम होगा। इसलिए हम लोग आइडियली आपको बोलते हैं कि आप इसमें 3 महीने से 6 महीने का व्यू लेके आइए। आज की तारीख में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा है। एक टाइम था जब आर्बिट्राज फंड के रिटर्न 6% होते थे और ये मार्क टू मार्केट की वजह से अगर रिटर्न 1% यहाँ वहाँ हो जाए तो आपके रिटर्न लिक्विड से बेटर या लिक्विड से खराब हो जाते थे। बट आज जब रिटर्न 8, 8.5, 9% है, 1% यहाँ वहाँ हो भी गया फिर भी आप लिक्विड फंड से बेटर ही दोगे। इसलिए हम लोग आज की तारीख में ये भी बोलते हैं कि 1 महीने के ऊपर की विजिबिलिटी तो भी आप आर्बिट्राज में आ सकते हो। बट आइडियल सिनारियो जो मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर के लिए सुटेबल होगा वो 3 से 6 महीने का होगा। ओके, एंड कैसे इवैल्यूएट कैसे करते हैं आर्बिट्राज फंड? रिटर्न्स देख के, पोर्टफोलियो देख के कैसे कोई इवैल्यूएट करे कि किस में डालना चाहिए? अगेन जैसे मैंने बताया पोर्टफोलियो तो आपको डेफिनेटली देखना है, खास करके फिक्स्ड इनकम वाला पार्ट। बट ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप जाके हर एक की फैक्ट शीट देखे और उनका पोर्टफोलियो देखे और उसमें आपको समझ में आए कि रिस्क है कि नहीं है। उसका इजी तरीका ये रहेगा, आप सारे आर्बिट्राज फंड का कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस देखिए। अगर कोई आर्बिट्राज फंड मैनेजर प्योर आर्बिट्राज कर रहा है, अच्छा आर्बिट्राज कर रहा है, तो अगर समझिए 20 आर्बिट्राज फंड है तो एक अच्छा आर्बिट्राज फंड हमेशा ही टॉप 5 में या टॉप 7 में होगा। कोई ऐसा आर्बिट्राज फंड मैनेजर है जिसने अनवांटेड रिस्क लिया है, जैसे मैंने बताया था फिक्स्ड इनकम में किसी ने ड्यूरेशन ले लिया है या किसी ने क्रेडिट ले लिया है, तो उनके रिटर्न्स और उनकी रैंक काफी वोलेटाइल होगी। जब इंटरेस्टेड उनके फेवर में जाएंगे वो नंबर 1 पे आ जाएंगे, जब इंटरेस्टेड उनके अगेंस्ट में जाएंगे, क्योंकि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता 100% गारंटी के साथ कि इंटरेस्टेड का व्यू मेरा हमेशा राइट होगा। तो आपने सोचा था इंटरेस्टेड गिरेगे, लेकिन गलती से अगर इंटरेस्टेड बढ़ गए तो आपका रैंक नंबर 1 से गिर के सीधा नंबर 20 आ जाएगा। तो कोई भी आर्बिट्राज फंड आप अगर इवैल्यूएट कर रहे हो तो आप उनका एटलीस्ट 6 महीने का रिटर्न निकालिए, 3 महीने का रिटर्न निकालिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका कंसिस्टेंसी देखिए, कितनी बार वो टॉप 5 में रहते हैं, कितनी बार वो बॉटम 5 में रहते हैं। आइडियली अगर कोई फंड टॉप 5 में और बॉटम 5 में इक्वल टाइम स्पेंड कर रहा है, यानी कि वो हाईली वोलेटाइल आर्बिट्राज फंड है, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा कॉल लिया है जो एक नॉर्मल आर्बिट्राज फंड को नहीं लेना चाहिए था। जहां पे उनका व्यू अगर राइट होता है तो वो टॉप 5 में आ जाते हैं और उनका व्यू अगर गलत चला जाता है वो बॉटम 5 में चले जाते हैं। As I told you, arbitrage fund is suitable for a conservative investor, those who don't want to take equity risk, those who don't want to take credit risk, those who don't want to take duration risk. So ideally ये सब चीजें अगर किसी ने की है तो आपको उस फंड को अवॉइड करना चाहिए। Okay, so ideally 3 to 6 months का रिटर्न देखना चाहिए for the last 3 to 5 years at least. At least. And उनका consistency देखना चाहिए कि how they have performed over 3 and 6 months period for the last couple of years. Perfect. Yeah. Perfect. Okay. And also, Bhavesh, we've spoken so much about arbitrage funds where arbitrage strategies are deployed. But आजकल काफ़ी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी आए हैं जो अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग एसेट क्लास में करते हैं, इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़। सो जो कमोडिटीज़ हैं वहाँ पे भी हमने देखा है कि आर्बिट्राज होता है। सो कमोडिटी आर्बिट्राज कैसे वर्क करता है? अब देखोगे आर्बिट्राज का डेफिनेशन तो सेम ही रहता है। आखिर आपने एक मार्केट में खरीद लिया, दूसरे मार्केट में बेच दिया। उसी तरीके से कमोडिटी का भी मार्केट है। जैसे इक्विटी के लिए हम लोग NSE और BSE देखते हैं, वैसे कमोडिटी के लिए MCX अवेलेबल है। यहाँ पे भी आर्बिट्राज सेम होता है। आपने फिजिकल गोल्ड ले लिया, सामने गोल्ड का फ्यूचर बेच दिया, और जैसे गोल्ड की एक्सपायरी होती है, जैसे इक्विटी की एक्सपायरी होती है हर महीने के आखिरी थर्सडे, कमोडिटी की एक्सपायरी थोड़ी अलग होती है, कोई बाय मंथली होती है, कोई क्वार्टरली होती है। लेकिन वहाँ पे भी रूल, अंडरलाइंग प्रिंसिपल सेम है कि एक्सपायरी के दिन फिजिकल और फ्यूचर का प्राइस सेम हो जाएगा। तो अगेन वही एग्जांपल आप लेते हो, आपने सिल्वर खरीद लिया 80,000 में, सिल्वर का फ्यूचर बेच दिया 81,000 में, तो ये 1,000 का जो गैप है विच इज अराउंड 1.2%, अगर आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड करोगे तो आपको ये 1.2% का स्प्रेड मिल जाएगा 1.5 महीने 2 महीने के लिए ट्रेड। तो साल के रिटर्न वही आपके 7% 8% के स्प्रेड बन जाते हैं। अब जितना इक्विटी आर्बिट्राज सिंपल है, कमोडिटी आर्बिट्राज ऑपरेशनली थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग तरीके से होता है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल सेम है कि आप एक्सपायरी तक अगर पोजीशन होल्ड करोगे तो आपको प्राइस का कोई रिस्क नहीं है, आपकी पोजीशन टोटली हेज है। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने बताया एक्सपायरी डेट, फ्यूचर में आपको पता है, इक्विटी में आपको पता है कि हर महीने का आखिरी गुरुवार एक्सपायरी डेट है, बट कमोडिटी में ऐसा नहीं होता। कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर ये 2 डोमिनेंट कमोडिटी है जिसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड आज की तारीख में आर्बिट्राज कर रहे हैं। उसमें अगर आप देखोगे गोल्ड, इसकी एक्सपायरी हर 2 महीने में होती है, जिसको हम बोलते हैं बाय मंथली एक्सपायरी। ये अगर आप देखोगे जितने भी इवन मंथ है, फरवरी, अप्रैल, जून, तो हर महीने की 5 तारीख को इसकी एक्सपायरी होती है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है सिल्वर का।
सिल्वर एक यूनिक प्रोडक्ट है, उसमें अगर आप देखोगे 3 बाय मंथली एक्सपायरी है और 2 क्वार्टरली एक्सपायरी है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट बट 5 एक्सपायरी अलग अलग टाइम पीरियड के साथ। तो इसलिए ये थोड़ा ऑपरेशनली थोड़ा अलग हो जाता है कि आपको पता नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि ये बार क्वार्टरली एक्सपायरी है या बाय मंथली एक्सपायरी है या किस डेट पे एक्सपायरी है। जो नॉर्मल इक्विटी से ये थोड़ा अलग होता है। दूसरा अलग चीज़ ये होता है कि इक्विटी तो आप फिजिकल इक्विटी एक बार आपने ले ली, आप आपके डीमैट में हमेशा के लिए होल्ड कर सकते हो, लेकिन बिकॉज यू आर अ म्यूचुअल फंड एंटिटी, अगर आप फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर लेते हो, आप पहले तो डायरेक्ट ले नहीं सकते, आपको लॉन्ग फ्यूचर लेना पड़ता है। लॉन्ग फ्यूचर एक्सपायर होता है, उसके अगेंस्ट आपको उसकी डिलीवरी मिलती है। एक बार आपके पास डिलीवरी आ गई तो गोल्ड एंड सिल्वर जो प्रीशियस मेटल हम बोलते हैं, इनका मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड आपका 180 दिन का है। जैसे रिलायंस का शेयर आपने ले लिया, आप उसको 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक होल्ड कर सकते हो, लेकिन फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर अगर आपने आपके अकाउंट में ले लिया, आप उसको 180 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। सो एवरी 180 डेज यू हैव टू फ्लिप योर ट्रेड, जो हम स्क्वायर ऑफ करते हैं या एक्सपायर करते हैं, तो एवरी 180 डेज यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस। तो इसलिए ये थोड़ा ऑपरेशनली थोड़ा अलग है। उसमें भी अगर आप देखोगे अलग अलग कमोडिटीज़ के रिटर्न्स भी काफ़ी अलग है। जैसे हम जो 2 कमोडिटी में काफ़ी इंटरेस्टेड है या म्यूचुअल फंड स्पेस काफ़ी इंटरेस्टेड है, उसमें गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड आर्बिट्राज के रिटर्न अगर आप देखोगे, हिस्टोरिकल रिटर्न काफ़ी लोअर रहे हैं, 4% 5% के आसपास। बट सिल्वर आर्बिट्राज के अगर आप रिटर्न देखोगे मंथ आफ्टर मंथ, सिल्वर आर्बिट्राज के रिटर्न हैज़ गॉन एज हाई एज 12-13%, और ऑन एन एवरेज भी वो आपको 8 से 9% रिटर्न देता है। कोई स्पेसिफिक रीजन इसका? तो इसमें अगर आप देखोगे, देखिए गोल्ड नॉर्मली ये जो हम इफेक्टिवली आप क्या कर रहे हो, आप किसी ना किसी को फंडिंग दे रहे हो। जो गोल्ड फ्यूचर लॉन्ग कर रहा है या जो सिल्वर फ्यूचर लॉन्ग कर रहा है, आप उनको फंडिंग दे रहे हो। जैसे मैं एक ज्वेलर हूँ, मुझे पता है कि दिवाली में फेस्टिवल सीजन है, मुझे उस वक्त सिल्वर का ऑर्नामेंट्स या गोल्ड का ऑर्नामेंट्स का मेरा डिमांड बढ़ेगा, बट आज प्राइस नीचे, मुझे आज मेरा प्राइस लॉक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आज ही दिसंबर महीने के या अक्टूबर महीने के फ्यूचर खरीद लिए। अब ये फ्यूचर एक बार मैंने खरीद लिए, अब जब वो एक्सपायरी आएगी तब मुझे इसके अगेंस्ट फिजिकल गोल्ड या सिल्वर मिलेगा और उससे मैं मेरी ज्वेलरी बना के मेरे ऑर्डर पूरे करूंगा। लेकिन वो जो 6 महीने के लिए मेरे को मेरा प्राइस रिस्क लॉक करना है, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर लॉन्ग करता हूँ। तो वहाँ पे जो फ्यूचर सेल कर रहा है, यानी कि एज एन आर्बिट्राजर जो मैं फ्यूचर सेल कर रहा हूँ, मैं उनको इन अ वे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, अगर ये गोल्ड या सिल्वर आज ही इंपोर्ट करके आज ही मेरे वेयरहाउस में रख दूँ कि अप्रैल महीने में लाके रख दिया, अक्टूबर या दिसंबर में जब भी दिवाली या फेस्टिवल सीजन आएगा मैं ये गोल्ड यूज़ कर लूँगा, तो 6 महीने का मुझे होल्डिंग कॉस्ट लग जाएगा। आज की तारीख में गोल्ड का इंपोर्टर जो है उनको इंपोर्ट फाइनेंस मिल जाता है 5% 6% पे, इसलिए गोल्ड आर्बिट्राज के रिटर्न काफ़ी कम है। सिल्वर में अब तक वो इंपोर्ट फाइनेंस इतना एक्टिव नहीं है, सिल्वर की वोलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू गोल्ड। तो इन सब रीज़न की वजह से सिल्वर का स्प्रेड गोल्ड के स्प्रेड से हमेशा ही ज़्यादा रहता है। अगर आप देखोगे नॉर्मली जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, उनका जो रेगुलेशंस है, आप एक कमोडिटी में 10% से ज़्यादा पोजीशन नहीं ले सकते। एट द सेम टाइम आपको मिनिमम 10% कमोडिटी में रखना है। इसीलिए आप देखोगे कि गोल्ड के रिटर्न भले कम हो, लेकिन हर फंड कुछ ना कुछ गोल्ड में भी एक्सपोजर लेता है, जो कि सिर्फ सिल्वर आप 10% क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप 9.5 9.7% सिल्वर लोगे, फिर भी जो मिनिमम 10% का क्राइटेरिया मीट करना है, तो आप वो बचा हुआ 50 पैसा 25 पैसा 40 पैसा जो भी रहेगा, उसको आप गोल्ड आर्बिट्राज में डालोगे। ओके, सो भावेश, टू क्विकली समराइज, स्टेडी रिटर्न्स एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जिसको ये कॉम्बिनेशन चाहिए वो आर्बिट्राज फंड कंसिडर कर सकता है। डेफिनेटली, यस। So anything else that you would like to summarize before we close the session? So I think arbitrage fund, ideally one should definitely look at this product, because earlier people used to think that arbitrage is only for ultra HNI or maybe corporates, but now look at, you can say, the changing tax environment. I think those who have money for STP or say emergency fund, those set of investor can also look to park their money into arbitrage purely for, you can say, getting better and consistent tax efficient return. So ideal investment, as I told you, is anything between 3 to 6 months. So at least give that much time for arbitrage fund to deliver better return. Okay, thank you so much, Bhavesh, for simplifying such a complex subject for us. It was indeed a very insightful and knowledgeable session for all of us, and I hope all our viewers have also had a good time and have a good understanding of how arbitrage works. Thank you. Subscribe to our YouTube channel, Edelweiss Mutual Fund, and click on the bell icon for notifications. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.